प्रशांत जी? Sir, we are live on all platforms, sir. ओके। नमस्कार दोस्तों, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। देश के पूर्व गृह मंत्री, देश के पूर्व वित्त मंत्री, जिन्होंने वर्षों तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक अहम भूमिका निभाई, मौजूदा राष्ट्र पर आए संकट और मौजूदा यथास्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य को ले आपके बीच में हैं। चिदम्बरम साहब अपनी बात कहेंगे, उसकी समरी मैं हिंदी में कहूंगा और उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। आदरणीय श्री पी चिदम्बरम जी। Thank you, Randeep. Good afternoon, my friends in the media. I have an important opening statement to make. I wish to begin by reiterating what the Congress President, Srimati Sonia Gandhi, said yesterday at the all-party meeting. She said, and I quote, "We, the Indian National Congress, stand by our defense forces and are prepared to make any sacrifice to ensure they are battle ready," unquote. At the end of the meeting, the Prime Minister made his concluding remarks. These remarks have left practically everyone, and I think you included, practically everyone baffled and bewildered. The Prime Minister said, and I quote, "No outsider was inside Indian territory in Ladakh," unquote. I repeat that. No outsider in territory in Ladakh, unquote. I have several newspapers on my table before me which carry the words of the Prime Minister, both in Hindi and in English. It is quite obvious that the Prime Minister's statement contradicts the earlier statements made by the Chief of Army Staff, the Defense Minister, and the Foreign Minister. If the Prime Minister's statement reflects the correct position, we would like to ask the government a few questions. If no Chinese troops had crossed the LAC, if no Chinese troops had crossed the LAC and are in Indian territory, what was the face-off on May 5th and May 6th, 2020? Between May 6th, what was the issue on which local Indian commanders were talking to their Chinese counterparts? What was the subject matter of the negotiations between the core commanders of the two countries on June 6th? We would also like to ask, if no Chinese troops were inside Indian territory, where did the clashes take place on June 15, 16? Where were 20 Indian soldiers killed and 85 injured? If no Chinese troops are in Indian territory, why did Foreign Minister Mr. Jaishankar's statement and other statements of MEA demand, quote, "the restoration of status quo ante," unquote? What was the meaning of status quo ante? What was the meaning of disengagement? That again in quote. What was the meaning of disengagement that the government said was underway? If no Chinese troops are inside Indian territory, why did 20 soldiers have to make the supreme sacrifice? Even after the PM's statement yesterday, China has blamed India for the clashes and has reasserted its claim to the entire Galwan Valley. What is the government's answer to this claim? Will the government reject this claim? When the Prime Minister said a few days ago that the sacrifice of our soldiers, why and where did the soldiers ensure that the sacrifice would not be in vain? We ask these questions
while reiterating our total support to the Government of India and India's defense forces. The defense of the nation and its territorial integrity are dear to the hearts of every Indian. We therefore seek answers to the questions with a view to redouble our commitment and present a picture of unity and solidarity. Now, Randeep will give a brief summary in Hindi, and after that, we will take questions. चिदम्बरम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय मित्रों, कांग्रेस गांधी जी ने और पूरा देश हमारी सेनाओं, सैनिक परिवारों और शहीद परिवार है और प्रधानमंत्री सीमा में चीन सीमा कर राष्ट्र की पूरे का So we seem to have lost Randeep, sir. The network issue is there. So what shall we do? Should we continue the press conference? I'm just trying, sir, in case you can come back, or we can start with the question answer. Yeah, I think we start the questions. We try to connect Randeep again, and then we can join back. Please ask the questions. Yes, sir. The first request has come from Patel from India Today. Randeep ji aa gaye hain. Does he come back? Acha. Let us Randeep, try. Try to connect Randeep first, please. Yeah. Sorry, sir, I had lost connection in between. Yeah, you now summarize in Hindi. With your permission, should I just continue and quickly recapitulate Please. it in Hindi, sir? Please, the Hindi part. Yeah. आदरणीय मित्रों, प्रधानमंत्री जी की बात की राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता लिए हर देशवासी को हक्का बक्का और आश्चर्यचकित कर दिया। एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान देश के विदेश मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और हमारी सेना के प्रमुख के बयान से बिल्कुल विपरीत है। अगर प्रधानमंत्री जी की कही गई बात सही है तो हम कुछ प्रमुख सवाल सरकार से पूछना चाहेंगे। अगर चीनी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भारतीय सीमा में घुसपैठ नहीं की थी या नहीं की है तो 5 और 6 मई 2020 का चीनी और भारतीय सेना के बीच में फेस ऑफ का के क्या मायने हैं? 5 मई और 6 जून के बीच में वो क्या मुद्दे थे जिन पर हमारे भारतीय सेना के कमांडर
और उनके काउंटर पार्ट चीनी सेना के कमांडर वार्तालाप कर रहे थे। इस आपसी चर्चा का, दोनों सेनाओं के बीच आपसी चर्चा का विषय ही क्या था? अगर चीनी सेना ने भारतीय भूभागीय अखंडता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर कब्जा नहीं कर रखा था। हम ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर कोई चीनी सेना ने भारतीय सीमा में कब्जा नहीं कर रखा था, तो 15 और 16 जून के बीच में जो खूनी संघर्ष हुआ जिसमें हमारे सैनिकों की शहादत हुई, वो कहां पर हुआ? क्या ये सही नहीं कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और लगभग 85 सैनिकों को गंभीर चोटें आई हैं? ये भारत मां के सपूत हैं। उम्मीद है कि भारत सरकार को इसका ख्याल होगा। अगर चीनी सेना ने भारतीय टेरिटरी के अंदर कब्जा नहीं किया, तो फिर देश के विदेश मंत्री ने साफ तौर से बयान देकर चीनी सेना को पूर्णता पुरानी यथास्थिति बनाए रखने की मांग क्यों रखी थी? विदेश मंत्री के द्वारा स्टेटस को एंटे या संघर्ष से पहले की यथास्थिति बनाए रखने की मांग के क्या मायने हैं? जब भारत सरकार ने ये कहा कि भारतीय और चीनी सेना की डिसएंगेजमेंट की कार्यवाही चल रही है, यानी चीनी सेना अपनी पुरानी स्थिति पर लौट जाएगी, तो इसके और क्या मायने पढ़े जाएं कि चीन हमारी सीमा में घुसपैठ नहीं कर आया है। कल भी प्रधानमंत्री जी के बयान के बावजूद चीन ने भारत पर गलत तरीके से इल्जाम लगाते हुए ये कहा कि गालवन घाटी का पूरा क्षेत्र चीन का है, जो सही नहीं। भारत सरकार का चीन के इस क्लेम के बारे में क्या सटीक जवाब है? क्या भारत सरकार को आगे बढ़ इस चीनी सरकार के इस क्लेम को सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था 2 दिन पहले कि हमारे सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उसके क्या मायने प्रधानमंत्री जी के दिमाग में हैं? शहादत कहां और क्यों हुई? क्या इसका प्रधानमंत्री जवाब देंगे? और कैसे प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे कर्नल बी संतोष और 19 सैनिकों की शहादत वो व्यर्थ न जाए? उन्होंने जो भारत मां की रक्षा के लिए शहादत दी है, वो शहादत देश के काम आए। हम ये सवाल पूछते, एक बार फिर दोहराते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा भारतीय भूभागीय अखंडता के लिए उठाए गए हर कदम के साथ है। हम हमारी सेना के साथ अटूट तरीके से खड़े हैं। देश की रक्षा और हमारी भूभागीय अखंडता की सुरक्षा हर भारतीय के दिल में। इसलिए राष्ट्रहित में हम ये सवाल पूछ रहे हैं ताकि देश एक संयुक्त और एकजुटता का कुछ सेकंड की आपको दिखाना चाहेंगे, फिर हम आपके प्रश्न लेंगे। श्री रोहन गुप्ता जी, कृपया उसे शुरू करें। जी सर। No one has entered our territory. Neither is anyone in our territory. None of our post is occupied by anyone. Neither is anyone in our territory. None of our post is occupied by anyone. Why is PMO contradicting PM Modi's statement? Yeah. Yes. शुक्रिया रोहन जी। Randeep, we can take आपके questions प्रश्न, now. आप चिदम्बरम साहब आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। एक एक करके सवाल पूछें। प्रणव जी, will you please coordinate? हाँ, आनंद पटेल जी पूछना चाहते थे इंडिया टुडे से पहला सवाल। आनंद, प्लीज गो अहेड। So my question is that whenever the opposition or Congress party in particular
questions the government on its policy vis-a-vis China and whatever has happened recently when Rahul Gandhi has tweeted out so many, the response of the BJP is very standard. The template remains that they start digging out old graves, blaming the Nehru regime for the Himalayan blunder, ceding Aksai Chin to the latest 2013 Shyam Sharan report when UPA was in power that accepted that 640 square kilometers of land has been grabbed by China. What is your response to this BJP's digging out old grave strategy? This is an old habit of BJP. They try to perfect it every time. We are not talking about 1962. We are not talking. BJP, unfortunately, is accountable to what is happening now. I think the people can see through these silly defenses of the BJP and their attempts to evade questions and not give proper answers. Today, we have asked questions relating to 2020. And I would appeal to the BJP and to the government spokesman to answer these questions and not talk about the past. We are not living in the past. We are living in the present, and we have to prepare for the future. Randeep sir, if this can come in Hindi as well, please. आदरणीय चिदम्बरम साहब ने कहा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी राजनीतिक द्वेष मुद्दा बनाकर राष्ट्रहित से खिलवाड़ कर रही है। सवाल बड़ा सीधा है, चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर कब्जा कर रखा है, जैसा कि समेत आपके चैनल के सभी सुरक्षा विशेषज्ञों, पूर्व आर्मी चीफ, आर्मी जर्नल्स और सैटेलाइट इमेजरी से साफ है। हमारी सरजमी से चीनी कब्जा खाली करवाने के लिए क्या कदम उठाएंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी सरकार और भाजपा को देश को बताना चाहिए, बजाय देश को भटकाने के। बात इसलिए बड़ी सीधी है, आज की परिस्थिति में एक ऐसी सरकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई हर क्षण देती है, क्या उनकी नाक के नीचे चीनियों ने हमारी सरजमी पर कब्जा कर लिया है और वो कब्जा कैसे छूटेगा? हम ये अनुरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार इस बात का साफ साफ जवाब दे, बजाय मुद्दों को भटकाने के। धन्यवाद। अगला सवाल। Thank you, sir. Rakesh Kapoor ji wants to ask the next question. Rakesh ji, please go ahead. Good day, Mr. Chidambaram. I have two small questions. Yeah. Sir, it is a coincidence that, sir, while India declared that there is no intrusion on the LAC in Galwan Valley, Ladakh, the same day, or I mean on Friday, China declared all of Galwan Valley in Ladakh. Does it imply that China's intent is fulfilled? They wanted to change the LAC status of LAC. And number two, was it a historical blunder? Was it a historical blunder diplomatically when Vajpayee government in 2002 admitted the Tibet as an integral part of China without claiming Aksai Chin? That is my two pointed questions, sir. Thank you. See, on your first question, if it is a coincidence, it would be a horrible tragedy. But I sincerely hope it was not a coincidence. I think the Chinese claim is consistent with what they have been claiming for the last few weeks. It is the Indian position, as articulated by the Prime Minister,
that has come as a total shock. And once the Indian Prime Minister makes the statement that there are no Chinese on Indian territory, he has to define what Indian territory is. That's why we've asked a pointed question. Now that China is claiming the entire Galwan Valley, do you reject this claim or not? If the government of India does not reject the claim of the Chinese today, they can't wait for another year. The claim was made yesterday. If they don't reject the claim today, I think it will have terrible consequences. As far as your second question is concerned, see, our position on Tibet is quite clear. We accept that China has control over Tibet and some kind of sovereignty. I don't think we need to mix up Aksai Chin with Tibet. Aksai Chin was lost in a war, so I don't think we need to mix those issues. Anyway, as I said, we must focus on the present and not talk about past events. Thank you, sir. I'll move to the next question. Next. मेरा मोटो पे है प्रणव भैया. Sanjay Mishra ji from Dainik Jagran wanted to ask a question. मैं आता हूँ बिलाल आपके पास. Yes, Sanjay ji, go ahead, please. Chidambaram sir, my question is that you just said that last 3 weeks Yes. China is claiming over Galwan, but last almost 60 years it was India who was, we considered it as our territory. Now, in the present situation, when China has claimed that Galwan is theirs, what is going to be its effect on the border management talks and border dispute talks, where India will stand now on the border talks with China after they claim the Galwan Valley, and we are, as of now, not rebuffed China? Well, as I said, I hope the government will answer China's claim today, not wait until tomorrow or day after or next week. So far, until yesterday, it is our understanding that we claim over Galwan Valley, and the LAC, according to us, runs through Finger 8. Now today, China has claimed the entire Galwan Valley is theirs. And the Prime Minister has made the statement that there are no Chinese troops in Indian territory. Putting 2 and 2 together, I think it leads to horrible conclusions. Before we spell out those horrible conclusions, I would ask the government to answer China's claim today, not wait until tomorrow. Let Government of India answer China's claim today so that our position is made clear. Bilal, please come in. Thank you, sir. Mr. Chidambaram, this is Bilal Fawzari from Swaraj Express. So my question is this: I'm asking the internal dimension of the Prime Minister's statement after denying the all fact regarding the Indo-China border issue. Do you think the way for last 6 years the Bharatiya Janata Party and its government is playing the politics in the name of nationalism, do you think in the coming election of Bihar and Madhya Pradesh, this nationalism will really, will come true in the eye of the public after the election of Prime Minister? Well, this will become an issue unless government clarifies and answers our questions. See, we have pointed out that the Prime Minister's statement clearly runs counter to what the Army Chief said, runs counter to what the Defense Minister said. The Chinese in large numbers have entered India. It clearly contradicts what the Foreign Minister said, that we want restoration of status quo ante. Now, clearly, 3 top officers of the Government of India have been contradicted by one statement of the Prime Minister. I don't know what the internal dynamics in the government today is,
I'm sure the foreign minister, the defense minister, army chief are asking themselves the same question which I'm asking. Did the Prime Minister contradict them? If the Prime Minister contradict them, I think unless the government clarifies and answers our questions today, this issue will become a big issue. And I don't know whether that will agitate millions and millions of people in India. Thank you, sir. Thank you, Next sir. question, Pradhan. Preeti Thank you, from thank you. Sahara wanted to ask a question. Preeti, please come Yes. in. Go ahead. जी सर, Preeti. नमस्कार सर। आपने हालांकि इस मुद्दे को उठा ही दिया कि कल प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया वो बयान सेना के बयान से और विदेश मंत्री के अब तक दिए बयान से बिल्कुल विपरीत है। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री की अगर बात पर हम भरोसा करते हैं तो ऐसे में तो उन्होंने सीधे सीधे हमारे सैनिकों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि चीन के कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक गलवान घाटी में भारत इंक्लूड कर रहा है, उस जमीन पर कब्जे की बात वो अपनी कर रहे हैं, उनका कहना है आधिपत्य उनका है और सड़क और पुल बना करके भारत की जो सेना है वो इंटरवीन करने की कोशिश कर रही है। इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आना और प्रधानमंत्री का ये कहना कि वो तो 1 इंच भी हमारी जमीन पर नहीं आए, इसको किस तरीके से देखते हैं? इनका ये स्टेटमेंट हमारे सीधे सीधे सेना की कार्यशैली पर और अब तक जो हुआ उस पर सवाल नहीं खड़े करता है। ऐसे में सेना का मनोबल नहीं गिरता है क्या? और साथ ही साथ एक और सवाल, कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था बलवंत सिंह जी को लेकर के, जो एक जवान घायल हुआ था, उनके पिता का ट्वीट था जिन्होंने बताया था कि वो कितनी संख्या में थे और हमारे सैनिक कितनी संख्या में थे, लेकिन आज उन्हीं का एक खंडन भरा एक वीडियो ट्वीट कर देते हैं जिसमें ये कहते हैं कि उनके पिता कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। इन दोनों पर ही जवाब चाहूंगी। Randeep? आदरणीय मित्र, प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया बयान जिस प्रकार से विदेश मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और देश के सेना चीफ, आर्मी चीफ, उन तीनों के बयान के विपरीत है। जिस प्रकार से विदेश मंत्री ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से बात करने के बाद लिखित तौर से विदेश मंत्रालय का बयान था कि गलवान घाटी पर चीन जबरन स्ट्रक्चर्स इरेक्ट कर रहा है और हम स्टेटस को एंटे की मांग करते हैं। जिस प्रकार से आर्मी चीफ ने कहा कि डी एस्केलेशन की एक्सरसाइज यानी चीनी सेना के वापस जाने की एक्सरसाइज इस समय शुरू है, प्रधानमंत्री का बयान बिल्कुल इसके विपरीत है। सच्चाई यह है कि गलवान वैली पर सदैव भारत का सरजमी का हिस्सा रहा है और कभी चीन ने भी गलवान वैली पर अपना हक नहीं जताया। ऐसे में जब चीन ने गलवान वैली पर कब्जा कर रखा है और आज वो गलवान वैली के क्षेत्र को जबरन हड़पना चाहते हैं और हमारे सैनिक उस गलवान वैली के क्षेत्र की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए थे, तो क्या उनकी शहादत को कहीं ना कहीं भारत सरकार धूमिल कर रही है और भारत की सरजमी पर जो हमारा क्लेम है, क्या भारत सरकार उसे कमजोर कर रही है? प्रधानमंत्री के बयान से सवाल ये उठता है। अगर ये सच है तो ये भारत की भूभागीय अखंडता के लिए अत्यंत खतरनाक है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार आज ही इस बारे में अपना स्पष्टीकरण देंगे। और आपके दूसरे सवाल का सीधा जवाब ये है, राहुल गांधी जी ने जो मौके पर परिस्थिति हुई जब हमारे निहत्थे सैनिक भेज दिए गए दिल्ली की हुक्मरानों की गलती की वजह से और दूसरी तरफ घात लगाकर चीनी सेना की ये दुस्साहस हुआ कि उन्होंने उन पर हमला किया और हमारे 20 सैनिक समेत हमारे कमांडिंग ऑफिसर के शहीद हो गए, तो ऐसे में इस पूरी व्यथा को सामने लाना विपक्ष के तौर पर और एक भारतीय के तौर पर हम अपना कर्तव्य मानते हैं। हमारी भावनाएं हर शहीद परिवार से जुड़ी हैं
और उन शहीद परिवारों की व्यथा और देश की व्यथा को सामने देश के रखना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। अगला सवाल। Randeep, I just want to add this to the question of our friend. The Chinese claim the entire Galwan Valley, and the Chinese are present in the Galwan Valley. The Prime Minister says there are no Chinese troops in Indian territory. Keep the two statements next to each other. The conclusion is a horrifying conclusion. That's why we demand that the government clarify and answer the Chinese claim to the Galwan Valley today and not wait until even tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. The next question has come in. A friend from Hindu, Sovna Nair, has sent in her question. She asked, in yesterday's meeting, the Congress stood isolated with all other opposition parties shying away from putting any questions to the government. In this climate of nationalism, wouldn't this hurt the Congress? It's completely wrong conclusion. All parties, including the Congress, expressed their solidarity with the government and the armed forces and said, we will stand by the armed forces. We will stand with the government in the defense of India and the territorial integrity of India. So there's no contradiction between the Congress and other opposition parties. The Congress raised questions because it was the first speaker, and we are the principal opposition party. We have raised a series of questions through a Congress president. Now, if succeeding speakers did not raise the same questions, that doesn't mean they disagree with those questions or distance themselves from those questions. Please understand that the principal opposition party, which speaks first, has raised the questions. Those who follow as speakers don't contradict the Congress, which means they also want answers to the same questions. Don't try to create a division between isolated. The Congress, as the oldest party in the country. Okay, sir, I'll move to the next question. Niyamika from TV Bharat. Niyamika, please ask. Sir, good afternoon. I have a slightly different question. So there is an outrage across the country to boycott Chinese products. PM Modi has also made an appeal of Atmanirbhar Bharat, but recently Railways has terminated a contract with a Chinese firm. But as Congress pointed out in the previous press conferences, India's manufacturing sector is still not that strong to to boycott all the Chinese components. So what is the way forward? And do you believe that at this time of crisis, we should give a boost to public-private partnership? You see, I think former Prime Minister Deva Gowda made an important statement yesterday. We have to tone down this rhetoric of nationalism because that tends to obliterate every other relevant issue. Now, I support that as far as possible, we must become self-reliant. But that doesn't mean we can decouple with the rest of the world. As far as traded goods are concerned, India must continue to be part of the global supply chain. Now, if you boycott Chinese goods, what part of China's trade with India is China's world trade? It's a fraction. It's a very small fraction. So boycotting Chinese goods, I don't think will hurt Chinese economy. It may or may not hurt the Indian consumer. I'm not in a position to say. But if we can make the same goods of the same quality and the same price and with the same efficiency, we should make it. I don't think we should bring issues like boycott when we are discussing very grave matter like the defense of India and the defense of the territory of India.
I think the defense of India, the defense of the territory of India are very weighty matters. Let's not bring in issues like boycott. Thank you, sir. With those words, may I conclude this press conference with your permission, sir? Yeah. And we will continue to raise important questions in the interest of national security and territorial integrity, as Shri P. Chidambaram said, while unequivocally supporting our armed forces, as also every endeavor of the government to defend our territorial integrity. I thank Chidambaram ji, as also each one of our journalist friends who have joined in today. Namaskar. Thank you, all of you, friends. Be safe. Take care. Thank you. Thank you, Randeep ji. Thank you, sir. Thank you, Randeep sir. Chidambaram